Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Atiya Parveen Abdul Haq, an assistant teacher in Al Hira Urdu High School, Bhisago. Dear students, today we are going to learn a poem from Unit 2, that is 2.1, Try Again. So just open out your course book of page number 28 and listen carefully. "'Tis a lesson you should heed, try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace. Though we do not win the race, what should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward, try again. All that other folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view, try again." Dear students, this poem is written by W.E. Hickson. William Edward Hickson. In this poem, the poet said that if at first you don't succeed, do not lose hope, but try again. The poet tells us the importance of trying again and again till we succeed. The poet says that if we fail in our first attempt, we should not get disappointed. We should try again, because then we will become courageous. The poet says that the path of life is never as simple as we think, and success waits only for those who do not lose heart in spite of all hardships in the way. Dear students, this little poem gives us a big lesson. It gives us a message of the hope, a message of courage, a message of hard work, perseverance, and optimism. Dear students, remember, if you want to become successful in your life, remember that great people don't become great easily. It requires a lot of time and patience. We should not become scared of the failure, but be courageous. I hope you all have understood the poem. प्यारे बच्चों, आज हम अंग्रेजी की 8वीं जमात की दूसरे यूनिट की पहली नज्म, जिसका उन्वान है दोबारा कोशिश करो, दोबारा कोशिश कीजिए, ट्राई अगेन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये नज्म एडवर्ड हिक्सन ने लिखी है और ये नज्म हमें बहुत ही अहम पैगाम देती है कि अगर, ये हमें नसीहत देती है, एक नसीहत शायर हमें देता है इस नज्म के जरिए कि अगर जिंदगी में कभी तुम्हें नाकामी का सामना करना पड़े,
हो सकता है कि आप पहली बार किसी कोशिश में कामयाब ना हो, तो नाउम्मीद ना हो, नाउम्मीद मत होइए, आप दोबारा कोशिश कीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत की कमी है तो आप अपनी हिम्मत बढ़ाइए। अगर आप अपनी मंजिल हासिल होने तक कोशिश करते रहेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। और अगर आपको आखिर तक इस कामयाबी की बुलंदी पर टिके रहना है, जमे रहना है, बने रहना है, तो आपको जिंदगी भर कोशिशें करनी होगी। 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, जितनी ही बार चाहे उतनी कोशिश करनी होगी। Because if you really want to be successful in your life, you should work hard continuously. आपको लगातार जो है सख्त मेहनत करनी होगी, तभी आप कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच सकते हो। कि अगर जिंदगी में किसी चीज में नाकामी हो जाए तो उससे नाउम्मीद ना हो, मायूस ना हो, बल्कि हमें कोशिश करती रहनी चाहिए जब तक कि हमें अपनी मंजिल ना मिल जाए या हम अपने मकसद को ना पा लें। इसीलिए शायर कहता है, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज।